Hi, my name is Dr. Saf, and today this is a video dedicated to all nurses to teach all my nursing staffs who are working in various hospitals in India and across the world. And today I'm going to teach something about the sepsis and its management. Some time back, World Sepsis Day has been celebrated in each and every hospital across India and around the world, and that is the reason I was planning to make a video for the nurses. So how are you are going to manage and what a nurse should know, and that is important to discuss today. So I will be speaking a little bit of Hindi also today, and let's start. The sepsis is a medical emergency and it is defined as fatal life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response. So what happens whenever there is an infection in the body, in any organ or any specific location? There are various sites where the infection can occur. So this infection, this is a harmful thing for your body. So what happens? This infection has to be eradicated. It has to be fought, and there is a defense mechanism in the body, and that is called host response. So the host response is to terminate this infection, and this response is called the regulated response. And there are various cells, there are various antibodies through which this host is responding to this infection, the infectious agent, which could be bacteria, virus, parasite, or fungus, or whatever. Okay, so this infectious particle has to be eradicated from the body, and this infection will therefore be eliminated, and this response will be called as the good response and good immune response, you can say. Okay, but what happens in case of sepsis? This response becomes extreme. So this response becomes dysregulated, and that is the definition. That in sepsis, what happens to response to infection? It becomes dysregulated. So it becomes over responsive. The host becomes over responsive to infectious agent, and by doing so, it causes self damage. It causes its own destruction, and that happens, and that is seen in the form of organ dysfunction, which becomes life threatening. So this is important to understand that in case of sepsis, the organs become, starts that, dysfunctioning or damaging, and this is self damage caused by the dysregulated response, and this is not a good response by the host, and that is called bad response. Okay, so I think it is quite clear now to all of you that what the sepsis is. The sepsis is the dysregulated host response to infection leading to life-threatening organ dysfunction. Okay, so what will you see in the patient is the life-threatening organ dysfunction. So we will discuss this more in the subsequent slides. So this is what I was talking about. Sepsis causes life-threatening organ dysfunction. So what are the organs which may be involved in case of sepsis? So the first organ you can look into is the cardiovascular system, where you will see the hypotension, mottled skin, and altered microcirculation. And when you look at the lactate level in the arterial blood gas or venous blood gas, that will be elevated. So there will be increase in the lactate level. So why there is increase in the lactate level? Because of disturbed perfusion to the tissues. So tissue hypoperfusion. Okay, because of hypotension, which occurs in case of sepsis. So in sepsis, सबसे पहला organ जो इन्वॉल्व होने लग जाता है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और चूंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है तो सारे ऑर्गेन्स में और सारे टिश्यूज में जो भी हमारे सेल्स हैं उनको ब्लड फ्लो कम पहुंचता है, तो सेल्स में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी को बनाने के लिए फिर लैक्टेट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होने लग जाता है। पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ना जाके लैक्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है, एंड दैट इज द रीजन यू विल सी इन ब्लड एनालिसिस लैक्टेट लेवल टू बी वेरी हाई। ठीक है,
नेक्स्ट सिस्टम वी विल लुक एट द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि पेशेंट थोड़ा सुस्त हो रहा है, या कभी कभी आप देखेंगे कि कंफ्यूज हो रहा है, डिसोरिएंट हो रहा है। दीज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग यू विल सी इन द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ डिजीनेस, पेशेंट में नॉट बी टॉकिंग प्रॉपरली, पेशेंट विल नॉट बी लुकिंग वेरी ओरिएंटेड। तो दिस इज कॉल्ड सीएनएस डिसफंक्शन। तो न्यूरोलॉजी यानी कि ब्रेन का भी जो है डिसफंक्शन शुरू होना चालू हो जाता है सेप्सिस में। तीसरा सिस्टम है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, शंटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ने लग जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं शॉक लंग, ठीक है, या एआरडीएस। इस सारी चीजों में होना शुरू हो सकता है। वो है रीनल सिस्टम, that is called oliguria. So what happens to the kidneys? Kidneys get perfused less. तो किडनी को ब्लड फ्लो कम जाता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट में कमी आ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगूरिया, जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो उसमें क्रिएटिनिन का अधिक होना या यूरिया, ये सब बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो किडनी का जो फंक्शन है वो डिटेरियोरेट होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है सेप्सिस के केस में, और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, यूरिन का कलर भी हाई हो जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस वाज द फोर्थ सिस्टम। फिफ्थ सिस्टम इज द हेपेटिक सिस्टम। यहाँ पे आपका जो लिवर का काम है वो ठीक से नहीं होगा, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो लिवर के एंजाइम्स तभी बढ़ते हैं जब लिवर के जो सेल्स होती हैं उनमें ब्लड फ्लो ठीक से नहीं जाता, और जब लिवर की सेल्स में ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता है तो उनकी सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो जब लिवर की सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं तो लिवर एंजाइम्स एचजीओटी एंड एचजीपीटी, जिसको हम लोग एसटीएलटी भी बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे लिवर को हम लोग बोलते हैं शॉक लिवर या सेप्टिक लिवर, ठीक है। तो हेपेटिक सिस्टम यानी कि लिवर भी इन्वॉल्व हो गया आपका, ये भी एक सेप्सिस का मार्कर हो गया। इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जा रहा है। हेमेटोलॉजी का मतलब है कि बोन मैरो से आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होती हैं और प्लेटलेट प्रोड्यूस होता है। ये तीनों के तीनों आपके कम होना शुरू हो जाएंगे बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से। तो प्लेटलेट काउंट सीबीसी में लो होगा, और प्लेटलेट काउंट होने की कम होने की वजह से पेटिकी देखना, और आपको हो सकता है कि आपको पेटिकी दिखें। पेटिकी क्या होती हैं? पेटिकी आर द ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, दे आर स्मॉल स्पॉट्स ऑन द स्किन। तो छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे पेटिकी, जो बहुत ही सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से होते हैं, या डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज सेप्सिस है, उनमें भी देखने को मिलते हैं। तो हमने आपको इस स्लाइड में सारे ऑर्गेन्स के बारे में, जो कि एक एक करके इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनमें डैमेज हो सकता है, वो सेप्सिस में देखने को मिलता है, ठीक है, वो हमने आपको इस स्लाइड में बता दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज व्हाई शुड वी वरी अबाउट सेप्सिस। हमको क्या प्रॉब्लम है सेप्सिस में? आपने देख ही लिया कि ऑर्गेन एक एक करके क्षतिग्रस्त होने लग जाते हैं इन्फेक्शन के फैलने की वजह से। तो ये सारे ऑर्गेन्स अगर खराब होने लग गए तो क्या होगा? मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। ये देखा गया है यूएसए में, खास तौर से यूएसए में ही, मतलब जो हमारे पास के जो फिगर्स हैं, 7,50,000 हर साल सेप्सिस से लोग अफेक्ट होते हैं, और उसमें कई सारे लोग जो है वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ सेप्टिक शॉक। मोर्टेलिटी जो है वो करीबन 20 to 30% देखने को मिलती है। ज्यादातर ये बुढ़ापे में एल्डरली पेशेंट्स आर एट हायर रिस्क ऑफ सेप्सिस बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल रिजर्व एंड एजिंग इम्यून सिस्टम। तो जो एल्डरली होते हैं या न्यूनेट होते हैं, उनमें इम्यून सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम उतनी परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता जैसा कि यंग में देखा जाता है। ऐसे और भी पेशेंट ग्रुप्स हैं जिनमें सेप्सिस की संभावनाएं ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हु इज प्रेग्नेंट, कुछ ऐसे पेशेंट जो माल नरिशमेंट का शिकार हैं, कुछ ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल बहुत पीते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको अलग अलग तरह की बीमारियां पहले से हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी पहले से खराब है या डायलिसिस पे हैं, ऐसे पेशेंट में सेप्सिस ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। ऐसे भी पेशेंट जिनमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो अपनी साफ सफाई ठीक से ध्यान नहीं रखते, उनको भी सेप्सिस हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पेशेंट विद सेप्सिस। सेप्सिस की कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसे कैसे पता लगा सकते हैं किसी पेशेंट में। तो उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट आपको दिख रहा है बहुत फीवरिश, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है या टेकेपनिया हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट, उसकी जो सांस है वो तेजी से चल रही है, वो शिवरिंग हो रही है, उसका लुक जो है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन खराब हो रहा है, वो बहुत ड्राउजी सा लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बहुत सारे साइंस बता रखे हैं, या पेशेंट के पेटिकी आ गए हैं, बहुत सारे ब्लीडिंग स्पॉट्स स्किन में दिखाई पड़ रहे हैं, या ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ठीक है, ये सारे लक्षण हो सकते हैं सेप्सिस लक्षण। कभी कभी वार्ड में देखने को मिलते हैं, कोई पेशेंट वार्ड में है, अभी तक ठीक है, बट सडनली यू सी दैट पेशेंट इज डेवलपिंग फीवर, tachycardia, tachypnea, hypotension. That means that patient is developing sepsis. Sometimes in emergency department, straight away patient may present to the healthcare provider with signs of sepsis. So anywhere you can see a patient with sepsis. So these are the important signs of sepsis called as Q SOFA, that is called quick. Q means quick, S means sepsis or sequential, O organ, F failure, A assessment. So Q SOFA is score which contains three criteria: altered mental status, fast respiratory rate, and low blood pressure. The systolic blood pressure less than 100, respiratory rate more than 22, or GCS less than 13. So any of these two, any of these three criteria, any two, so we can take a help of SIRS criteria. तो SIRS criteria में आपके होते हैं temperature more than 38 degrees Celsius or less than 36 degrees Celsius. Both fever and hypothermia can occur in sepsis. Heart rate more than 90, that is called tachycardia in this case. Respiratory rate more than 20 or 22, that is tachypnea, or PaCO2 less than 32, or WBC more than 12,000 or less than 4,000, or more than 10% bands. Bands mean that there are infectious, particles. Some neutrophils are toxic, having toxic granules, suggestive of inflammation. So these are the criteria by which you can say that a patient has developed a systemic inflammatory response. Okay, यानी कि पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन फैल गया है, यानी कि कोई ना कोई जो होस्ट रिस्पॉन्स है वो बहुत अधिक हो गया है, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है. So that is where you can suspect that patient might have sepsis. Now the next question is, how will you manage the sepsis? So that is also very important. So only nursing considerations. Okay, we are talking about today the nursing. That is why मैं अपनी बात को बहुत ही सिंपल रखूंगा. तो अब यहाँ पे एक स्टोरी है. एक पेशेंट है, 75-year-old man, a office goer, a diabetic for last 10 years, on irregular medication since last 1 month due to work related stress or something. He presented to you with fever, cough for last 3 days, boils scattered all over the body since last 10 days, and severe rapid onset breathlessness for 1 day. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने जब ब्लड प्रेशर लिया तो ब्लड प्रेशर इज ऑन द लोअर साइड, systolic blood pressure less than 80 millimeter of mercury, patient is looking tachypneic and tachycardic, and use of accessory muscles are visible. Oxygen saturation is 75%. अब आपने जब ब्लड शुगर किया तो ब्लड शुगर शोज 320 milligram per deciliter. So this is the story. Now with this kind of clinical picture, what would you do? आप क्या करेंगे ऐसे पेशेंट्स में जो कि फीवरिश है, कॉफ की हिस्ट्री है, और आपके पास इमरजेंसी में जब आ रहा है तो सांस फूल रही है, फीवर आ रहा है, टैकीकार्डिया है, टैकीपनिया, व्हाट विल यू डू? एंड शुगर इज आल्सो ऑन द हायर साइड, 320 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. तो यानी कि इस पेशेंट को डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं. तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्योंकि ऑक्सीजन कम है और ब्लड प्रेशर लो है तो इसको फटाफट हम कैजुअलिटी में या आईसीयू में एडमिट करके और इसको हम कुछ ना ऑक्सीजन थेरापी देंगे पहले, और कुछ मॉनिटर्स लगाएंगे. सो remember that sepsis is a medical emergency. If you waste
every hour, the mortality goes up. So if you do not act fast, your patient may die. Nursing care plan should be to maintain the adequate perfusion, because sepsis में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो सारी बॉडी में ऑर्गेन्स में परफ्यूजन डिफेक्ट हो गया, परफ्यूजन लो हो गया है। तो आपको परफ्यूजन को बढ़ाना है बाय गिविंग मोर वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को जो इम्प्रूव करने वाली दवाइयां हैं वो देने की जरूरत है, वैसोप्रेसास एंड नैनोड्रॉप्स। एंड ऑल्सो पेशेंट विल बी देयर विद यू फॉर लॉन्ग टाइम, बेड रिडन होगा, बेड में पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्पेशली डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पैरों में की नसों में क्लॉट हो जाएंगे, या बेड सोर्स जिसे बोलते हैं, पीछे पीठ में अल्सर्स बन जाएंगे, या गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाएंगे, ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो बेड रिडन पेशेंट्स में हो सकते हैं। उसको प्रिवेंट करना भी आपका काम है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो हम आप आज बात नहीं करेंगे इस बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स का पता लगाना कि ये सेप्सिस आया कहाँ से। कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन का सोर्स है, ठीक है। तो ये भी पता लगाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, बहुत तरह के इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स हम लोग, स्पुटम का एग्जामिनेशन, सीएसएफ कल्चर, ये सब कर सकते हैं। So treatment is very important along with monitoring. And remember that you have to first assess the patient whether patient is having very bad signs. For example, अगर टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा है या ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो आपको उसी तरह से बहुत फास्ट फास्ट काम करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 5 चीजें होती हैं, द 5 things which we have to do within 1 hour, that is called 1 hour sepsis bundle. So remember that the source of sepsis could be anywhere. सेप्सिस का जो सोर्स है, कोई इन्फेक्शन का जो फोकस है, वो कहीं पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे ब्रेन के अंदर अगर होगा तो उसको बोलेंगे मेनिंजाइटिस, या जैसे लंग्स के अंदर है तो निमोनिया बोलेंगे, अगर सॉफ्ट टिश्यू या स्किन पे है तो स्किन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन बोलेंगे। अगर ब्लड के अंदर किसी कैथेटर की वजह से, कोई लाइन की वजह से इंफेक्शन हो रहा है, वो भी देखेंगे कि पेशेंट को कोई लाइन तो नहीं है। या कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओल्ड पेशेंट में स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी देखेंगे। और एब्डोमिनल इन्फेक्शन भी देखेंगे, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, डायरिया है, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को सर्च करनी पड़ेंगी पेशेंट में। ये डॉक्टर करता है, लेकिन नर्स को भी एक बार पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, front and back, everywhere you have to search for the source of infection. Okay, this is also your duty as a nurse. So remember that sepsis is a state where perfusion is not good. Perfusions mean blood flow. So because of low blood pressure, even with the normal blood pressure, there may be perfusion defect. ठीक है, तो ये आपको कैसे दिखेगा, इसको बोलते हैं capillary refill time. तो it is very simple. You have to just press over the finger or over the toe for just a few seconds. You can just keep it pressed for about 30 seconds. Okay, and then you release. So once you release, तो क्या होगा, कैपिलरी रिफिल हो जाएगी यहाँ पे। तो जैसी ब्लांचिंग होगी, रिलीज करोगे तो एकदम रेड हो जाएगा, ये दैट इज नॉर्मल। बट सपोज इफ इट इज नॉट अकरिंग, इट टेकिंग टाइम, दैट इज कॉल्ड डिलेड कैपिलरी रिफिल टाइम। अगर सीआरटी टाइम जो है वो मोर देन 3 सेकेंड्स है, दैट मीन्स दैट देयर इज ए परफ्यूजन का प्रॉब्लम, ब्लड फ्लो इज नॉट एडिक्वेट, एंड दैट इज वेरी टिपिकल ऑफ सेप्सिस। ओके, यूरिन आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर पेशेंट कम्स टू यू, यू हैव टू आस्क द हिस्ट्री कि कितना यूरिन पास किया है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पुट द यूरिनरी कैथेटर, and exactly you have to measure every hour using the urometer. You have to measure every hour urine output. That is very very important, because किडनी में अगर ब्लड फ्लो नहीं होता है तो यूरिन आउटपुट में भी कमी हो जाती है। So these are the important management steps. So I'm not going to talk about each and everything, but at least we will learn today the our one sepsis bundle, which was proposed by surviving sepsis campaign in 2018. तो तब से हम लोग 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें बहुत सिंपल है, इसको आप सुन लीजिए। तो एक कोई पेशेंट अगर सेप्सिस का आ रहा है तो दैट इज योर मेडिकल इमरजेंसी। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले तो आप मॉनिटर अटैच कर दें, उसके बाद आप उसका एबीजी या वीबीजी करके लैक्टेट को मेजर कर ले। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेजर द लैक्टेट। सेकेंड स्टेप इज टू टेक द ब्लड कल्चर। तो ब्लड कल्चर हम लोग कैसे लेते हैं वो हम बाद में बताएंगे। उसके बाद फिर आपको थर्ड स्टेप में एंटीबायोटिक्स देना है। You have to remember that you must take the blood culture before administration of IV antibiotics. अगर
टाइम लग रहा है ब्लड कल्चर लेने में, तो एंटीबायोटिक्स पहले भी दे सकते हैं। यू शुड नॉट डिले द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक पेंडिंग द ब्लड कल्चर। ऐसा कभी ना करें। अगर ब्लड कल्चर लेने में टाइम लग रहा है किसी वजह से, किसी रीजन से, तो एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, बट दिस इज डिजायरेबल और एक्सपेक्टेड दैट you should take a blood culture before giving the antibiotic to the patient. Then step 4 is that you have to begin rapid administration of IV fluid. तो ये नहीं है कि किसी में हमने फ्लूइड कम दे दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव 30 ml per kg ऑफ फ्लूइड, ओके, दैट इज क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड देना जरूरी है, और तो तब दीजिए आप जब पेशेंट ब्लड प्रेशर लो है या लैक्टेट लेवल मोर देन 4 है। उसी केस में हम लोग फ्लूइड का बोलस देते हैं। इन अदर केसेस वी डू नॉट गिव फ्लूइड बोलसेस, रिमेंबर दैट ऑलवेज। if there is no hypotension and lactate level is less than 4, then there is no need to give fluid boluses. Okay, you can just give the maintenance fluid. Step 5 is that if you are not able to maintain the blood pressure, the mean arterial pressure more than 65, then you have to start the vasopressors. वेसोप्रेसर आप लोग पेरिफेरल लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज डिजायरेबल दैट यू शुड स्टार्ट वेसोप्रेसर थ्रू सेंट्रल लाइन, बट यू कैन ऑलवेज स्विच फ्रॉम पेरिफेरल लाइन to central line. और वेसोप्रेसर में NORAD is preferred, that has to be given through the infusion pump or syringe pump. So syringe pump is desirable. Now we will talk about the blood culture. So blood culture has to be taken from the peripheral vein by doing a veni puncture like this, and this is the blood culture bottle. You have to take at least 20 ml of blood from two different sites for adequate organism to grow. Okay, that is called गुड यील्ड। सो नहीं तो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे, ब्लड कल्चर नेगेटिव आएगा। तो ब्लड कल्चर के लिए यू हैव टू टेक अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ सैंपल। This is important to understand that you should put a green or gray color, that is wide bore cannula. Don't put a cannula like red or blue in an adult patient. You should try to put either green or gray or orange cannula only, wide bore cannula. At least you should put two cannulae in a patient with sepsis or septic shock, because you require a resuscitation. Resuscitation करने के लिए cannula बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग फ्लूइड की बात करेंगे तो क्रिस्टलॉइड हैज टू बी गिवन एट लीस्ट 30 ml per kg bolus if blood pressure is low, systolic blood pressure less than 90 or mean arterial pressure less than 65. You have to give fluid bolus, that is crystalloid, either normal saline or ringer lactate or plasma light. Whatever fluid you want to give, you can give. There is no added advantage of using either two. ऐसा कुछ नहीं है, but at least give adequate bolus of fluid, okay, and then see that blood pressure is improving or not. If patient's blood pressure is improving, that is good. You should monitor all the time. If patient's blood pressure is not improving, better to put an arterial line. That is very imperative. If the patient is hypotensive, you should put an arterial line to monitor blood pressure beat to beat. ठीक है, और उसपे vasopressors भी आप लोग मैनेज कर ले जाएंगे। So remember, if you are not able to improve the mean arterial pressure more than 65 or lactates are not decreasing, then in that case it is better to start the noradrenaline or vasopressor through a syringe pump. Okay, so you should start through a syringe pump. You can insert it into the peripheral line and later you can change to the central line. So remember that you have to get ahead of sepsis. This is an important message given by CDC. You should be able to go to the CDC website and you should go through this get ahead of sepsis document. Okay, this is very important because if you could prevent sepsis and if you could treat and detect the sepsis and treat it later in time, then you can save at least 30% of patients who are going to die. So this is important to do everything in time. You should have a box. So this is ये एक हॉस्पिटल है, यूनाइटेड लिंकनशायर हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट का यूके में। तो वहां पर इन्होंने एक इस तरह का सेप्सिस बॉक्स तैयार किया है, बहुत अच्छी चीज है। इन विच दे हैव केप्ट IV cannula, IV set, fluid, blood culture bottles, some antibiotics के vial, and crystalloids fluid, and also vasopressors and various other drugs. Okay, तो
these things are being kept inside the sepsis box. And whenever patient is detected to be having sepsis, then in that case sepsis box has to be uh, opened bedside, and uh, you have to complete 1 hour sepsis bundle, so that everything is given in timely manner. And then if you do not delay the management of sepsis, probably the outcome will be very, very good. So these are the few questions for all of you, so you can answer and comment in the comment box. So thank you so much. I think I have mm, that's all. Thank you so much. Bye bye.